Jai Jagannath. Friends, this is Vasudev Panda. Welcome to Master English. Play? Yes. The Ballad of Father Gilligan. Poem section आज start करिवा. Prose section already सरी जाइए. Live session जो हमर अछि. Live रे समस्त वीडियो अछि जो माने देखि रहो. Live को जाई के देखि दबो पहिले. हैं? Fresh वीडियो सब अछि. ए 15 days भीतर सब. तो आज हमें बच्चा बच्चा एमसीक्यू पढ़िबा कोतरो बच्चा बच्चा सिलेक्टेड एमसीक्यू एरा गरा नै 20 रु 25 एमसीक्यू ताटर अधिक न 15 मिनिट सेशन मु तुमको सब बेले कहे 15 मिनिट रे पिला जति कंसंट्रेट करबा 15 मिनिट तापर आ पिला कंसंट्रेट करि परिबे नै ह्यूमन टेंडेंसी जा ओके तो फ्रेंड्स मान सहित शेयर कले एमसीक्यू रो मजा नियारा से माने हम जणा पड़िबो से केते पढिछि मु केते पढिछि फ्रेंड्स मान शेयर करिवा ओके लेट्स स्टार्ट प्रथम प्रश्न कोन बिले What does the poem talk about? What does the poem talk about? एक कविता रे को विषय माने कुआ जाइछ ऑप्शन ए the presence of God everywhere and his love for all, option B the world of beauty and romance, option C the presence of human suffering, then roila none of the above. Okay, तो ए भितरु उत्तर कोटा हबो पले किए कहबा What does the poem talk about? उत्तर आसिने उत्तर हम कहि दोछि the presence of God everywhere and his love for all. भगवान सर्वत्र विद्यमान एवं भगवान समस्तन को भल पाते छोट रु छोट जीव को भल पाते ताको नै कि कविताटा लेखा हिछि ओके जीवा परवर्ती प्रश्न देखो When was W.B. Yeats born? William Butler Yeats, the author. केबे जन्म होइथिले बेले ऑप्शन रहला 1865 1869 1870 and 1866. So when was William Butler Yeats born? The right answer is it is 1865 1865 रे विलियम बटलर येट्स कर जन्म होइतला परवर्ती प्रश्न होची why was Father Gilligan worried? फादर गिलिगन व्यस्त रहउतले काहे की why was Father Gilligan worried? 3 नंबर प्रश्न because he was old, B because he was overburdened by his religious duties, option C because his poor folks were dying in large number, and option C all the above. तो कौन हबो बिले उत्तर कौन हबो because he was old. Yes, हमें जब देखियो से वृद्ध थिले ऑप्शन बी because he was overburdened by his religious duties धार्मिक परंपरा यस बहुत सारा बोझ होतला तांको ऊपर ओके देन सी because his poor folks were dying in large number बहुत सारा लोक मरुथिले से अंतर तापर हला ऑल द अबव ताले तीनटा जाको स्टेटमेंट जदी ठीक ताले कोन हबो all of the above, option D होजी यारा करेक्ट आंसर पिले परवर्ती प्रश्न देखिबा What is referred to as month hour of if? month hour of if बोली कहा को रेफर करा जाइछ ऑप्शन ए डन DAWN, ऑप्शन बी नून, ऑप्शन सी इवनिंग, ऑप्शन डी none of these. What is referred to as month hour of if? कोडा हबा पिले month hour of if बोली को जिनसटा को रेफर करा जाय व्हाट इज रेफर्ड टू डन, नून, इवनिंग, नॉन ऑफ दिस. इवनिंग यू करेक्ट इवनिंग को month hour of if बोली को जाय एठी जदी dusk शब्दटा थांता ताले dusk कहतांते पिले बट जेतु एठी इवनिंग अछि ताले इवनिंग टा कहबा डन को मत month hour बोली को जाय छी बट इट इज द month hour of eve जेहेतु अछि याको हमें इवनिंग बोली के नवा परवर्ती प्रश्न होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ला why were people dying लोक माने काहे की मरुतले why were people dying ऑप्शन ए बिकॉज़ ऑफ एपिडेमिक वडा एपिडेमिक महामारी व्यापुतला, बी बिकॉज़ ऑफ वॉर युद्ध होतला, सी बिकॉज़ ऑफ सिविल वॉर, D because of accidents. Why were people dying? लोक माने काहे की
मरुथिले पिले why were people dying because of epidemic because of war because of civil war because of accidents कोन हबो उत्तर I am waiting your answer पिले ऑप्शन ए वेरी गुड यस ऑप्शन ए बिकॉज ऑफ एपिडेमिक महामारी से अंचल एक अजना रोग महामारी व्यापी जो लोक माने मरथिले ओके परवर्ती प्रश्न व्हाट डज द एक्सप्रेशन ग्रीन शॉर्ट्स रेफर टू ग्रीन शॉर्ट्स जो एक्सप्रेशन टा अंडर ग्रीन शॉर्ट्स ले व्यवहार कराई छि एठी ग्रीन शॉर्ट्स शब्द रो अर्थ कोन ऑप्शन ए ग्रेप्स कवर्ड ओवर बाय ग्रीन ग्रास बी द स्टार्स इन द स्काई C. The people in the Paris. D. None of these. So, what does the expression green shorts refers to? Option A. Grapes covered over by green grass. B. The stars in the sky. Then C. The people in the Paris. D. None of these. Question number 5. ठीक उत्तर होची grapes covered over by green grass. माने समाधि जहाँ ऊपर ऑलरेडी ग्रीन ग्रास सबुज घास आच्छादित हो जाइतिलो ग्रीन शॉर्ट्स रो अर्थ परवर्ती प्रश्न व्हाट डज द वर्ड फ्लॉक रेफर टू द पोएम द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन इज व्हाट डज द वर्ड फ्लॉक रेफर इन द पोएम द बैलेड ऑफ फादर गिलिगन ए बैलेड ऑफ फादर गिलिगन रे फ्लॉक वर्ड टा कहा पई व्यवहार कराइछ ऑप्शन ए a church congregation guided by a priest who is Father Gilligan. B. A group of animals. C. Sheep. D. All the above. सर्वोपरि समस्त ताहले ठीक उत्तर कोटा पिले which is the correct answer. So absolutely correct. माने आंसर राइट आंसर होची yes कोटा option A church congregation guided by a priest who is Father Gilligan. गोटे चर्च एरिया जन समूह को ये फ्लॉक बोली कह जाइछि जो माने पीटर गिलिगन के द्वारा परिचालित होतले गाइड होतले देखिबा परवर्ती प्रश्न हाउ डज द फादर रिएक्ट व्हेन अनदर पोर मैन सेंड फॉर हिम हाउ डज द फादर रिएक्ट व्हेन अनदर पोर मैन जते बडा आउ जने गरीब लोक आसिला तांको फादर केमिति रिएक्ट कले हाउ डज ही रिएक्ट ऑप्शन ए he denied to go जीवा पे मना कर देले बी he scolded the messenger से जिया खबर आने तक गाली कले सी he began to grieve complain करिवा आरंभ कले he started at once all of a sudden से पळैले कोन हबो according to the book ठीक उत्तर कोन भेले what is the correct answer at the mouth or he began to grieve boy लगाई another poor man sent for him and he began to grieve so he began to grieve होची सीधा सीधा बहिर होची she began to grieve होची ठीक उत्तर बोलो परवर्ती प्रश्न what is a ballad ballad कहले कोन ऑप्शन ए narrative poem वर्णनात्मक एक कविता बी ए सब्जेक्टिव पोएम कर्ता विशेष एक कविता ए डिस्क्रिप्टिव पोएम वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव जहाँ विश्लेषण करे ए शॉर्ट पोएम एक छोट कविता व्हाट इज ए बैलेड कहले कोन तो हमर जो वार्म अप सेक्शन अछि बहिर सेठी प्रथम स्टेंज रे प्रथम बैलेड इज ए नैरेटिव पोएम लिखाई सो ए बैलेड इज ए नैरेटिव पोएम दिस इज द करेक्ट आंसर अ बैलेड इज ए नैरेटिव पोएम जो थरे गोटे माने कहानी को सीक्वेंस हिसाब रे कविता माध्यम रे वर्णना करे ताको हम नैरेटिव बोली कहै सो बैलेड इज ए नैरेटिव पोएम परवर्ती प्रश्न देखियो परवर्ती प्रश्न होउची who were Father Gilligan's flock option A the sick people the dead its parishioner the church attendants okay ये होउची option the dead so its parishioner कौन थिला who were Father Gilligan's flock the sick people the dead his parishioner the church attendants ताले correct answer कोटा is parishioner होउची ठीक उत्तर पहले parishioner होउची correct answer तमने ठीक होउची parishioner परवर्ती प्रश्न होउची what is God is wrapped in
what is God is wrapped in? Bhagavan koudre kavare ki thaant. What is God is wrapped in? White robes, red robes, purple robes, black robes. So God is wrapped in purple robes according to the book. So we'll go for purple robes. Purple robes is the right answer. It is option C. Parvati Prashna. Whom did Father Gilligan wake up from sleep? Father Gilligan kahaku nidaru uthaile pile. Whom did Father Gilligan wake up from sleep? Kahaku uthaile? It's very sure. The sick man, his horse, his attendants. Here was the option. Whom did he wake up? He woke up his horse. Correct. So he woke up his horse. Taku ghodaku stood upright on the floor. Next judge. Parvati Prashna. Who opened the door? Kabato kiye kholla? Father jetale pahunchile. Who opened the door? The sick man, the father, and old man, the sick man's wife. Both Father Prashna. Who opened the door? The sick man's wife opened the door. Option D होती ठीक उत्तर. The sick man's wife opened the door. परवर्ती प्रश्न. Why was the sick man's wife surprised to see the father? Why was the sick man's wife surprised to see the father? Father Gilligan को देखला परे से माने रुग्ण लोकर स्त्री आश्चर्य हला काहे की. So why was the sick man's wife surprised to see the father? Option रहिला हम पाखरे. कोन? Option A, she did not expect him to come so early. से बाबू नथिला से जल्दी आसी हो लेकिन. Option B, the poor man had already died. गरीब लोकटे already मरी जाइतिला. Option C, she had seen the father perform the death rituals. से टिके आगु देखितिला जे फादर डेथ रिचुअल्स माने मृत्यु बेला जो कार्यक्रम थिला कस्टम थिला सब करके जाइतिले. And option D, the father looked very कारण पीटर गिलिगन वेरी व्यस्त विब्रत देखा जाउथिले. ताहेले ठीक उत्तर कोन हबो पिले? Yeah, the correct answer said seen the father performing the death rituals. कारण टिके आगु से देखितला फादर माने डेथ रिचुअल सब काम सारी गिरी घर को जाइथिले. तब आउ टिके परे 10 मिनिट परे से जेतो पुनी थरे फादर को देखिला. She was a little worried. She was a little surprised. Parvarti Prashna. Why was the father shocked? Why was the father shocked? Option A, he saw the moths again. B, he thought that the man had died while he slept. C, he realized that he had not finished his prayer. D, DOG, he realized that he could not attend the sick man. Yoji, charity option. Why was the father shocked? This is the question. So, ठीक उत्तर कौन होगा? Stood upright on the floor because he thought the old man had died. So, कौन भाविले? He thought that the man had died while he slept. He thought that the man had died while he slept. Okay. परवर्ती प्रश्न. Why did the old priest sway in grief? Why did the old priest sway in grief? Option A, he could not reach Aliyah. B, he could not perform his religious duty. C, he could not save the man. D, he could not see the dead man. What is the answer? Because he could not perform his religious duty. कारण से तांकर जो ड्यूटी थिला से ड्यूटी करि पारि नथिले. Last question. Whom does the father call the least of things? Whom does the father call the least of things? छोटोरु छोटो जीव, छोटोरु छोटो जिंस बोली काकू कुआ जाय छै. Option A, human beings. B, the sick parishioner. C, the sick man. D, himself. Whom does the father call the list of things? Human beings, the sick parishioner, the sick man, and himself. Those option. ठीक उत्तर होची. Oh yes, option D was correct. Option D, himself. Himself होची ठीक उत्तर फिले. Himself होची ठीक उत्तर. The father,
कल हिमसेल्फ द लिस्ट ऑफ थिंग्स छोटो छोटो जीव क्षुद्र जीव भाव में निज को कंपेयर करछंती थैंक यू फॉर जॉइनिंग द सेशन आसंता काली आई थिंक हिस्ट्री पॉलिटिकल भी दुईटा क्लास स्टार्ट करी बोले भाभी छि मु ओके सी यू टुमारो काली जदी हबो चारटा क्लास हबो न दुईटा क्लास तो हबो इंग्लिश में थैंक यू फॉर जॉइनिंग स्टेट ऑफ जय जगन्नाथ